आज यार उदासी भरा दिन, नॉट सो गुड। मतलब ऐसा कुछ इवेंट नहीं हुआ है जिसको लेकर उदास हो इंसान, बट मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल ही अजीब सा, वियर्ड, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड। क्या हो गया, अटक क्यों गया ये? फिर से चालू करना पड़ेगा। आई थिंक सो, पेनल्टी मिलेगा एक अलग मस्त। ये कितना मस्त लगता है। हाँ, क्या ये दिन है, अजीब सा ही एकदम, बोर, बहुत ज़्यादा बोर, इतना ज़्यादा बोर, काम करते हुए बोर, काम नहीं करते हुए बोर, काम का सोच के बोर। हे भगवान, अगले जन्म मच्छर बनाना, बहन जो उड़ो मरो खत्म, खून चूसो खत्म। हालांकि वो तो फीमेल मच्छर हो जाएगा, फिर मेल मच्छर बनाना मस्त, फिर लेटे रहो, सेक्स करो, सब खत्म। That's it. मतलब लाइफ हो तो मच्छर जैसे। Gotta go! Headshot! Watch out! Deal with my car. Go, go, go! 10 seconds until stage I'm out of here! Gotta go! Neutralize. Stage 2. ऑलरेडी और खराब करने के लिए। I'm out of here! Between the eyes. Go, go, go! Now we're cooking. लगेगा ही नहीं। I'm out of here! Smart move! Gotta go! Breaking them. Gotcha. Ultimate orb spawning. कहाँ मार रहे हैं? Nice try! Raze is on a rampage. Stim beacon here. Go, go, go! 10 seconds until stage change. Go, go, go! Stage 3. Ollie. Get out of here! Gotta go! I'm out of here! Focusing. I'm out of here! Gotta go! I'm out of here! Ultimate orb spawning. Watch out! Go, go, go! Not ready! Gotta go! स्लाइड हो गया।
Cutting their vision. Go, go, go! See ya! Reloading. Go, go, go! Hey! Got one! New stage. Gotta go! Not ready yet. This way! Final stage. Gotta go! I'm out. I'm out of here! Down you go. Shocking! My ult is ready. Go, go, go! No distraction. My ult's ready. Drop! Making cover. Got three. Gotta go! You want to play? Let's play. I'm out of here! Charge your ults. Go, go, go! Okay. I'm out of here! Take this! Four! This way! My ult's ready. Go, go, go! Gotta go! Gotta go! Done. I'm out of here! Grenade! Stim beacon here. Jet's grounded. That's three! Go, go, go! 15 kills remaining. 4 down! Destabilizing. Take this! Oh, I'm out of here! Let hunt begin. Gotta go! Show me a target. Go, go, go! Charge your ults. Fire in the hole! Watch out! 5 kills left. Gotta go! Shortcut! Free for me! Molly. Not ready! Gotta go! क्या हो गया यार? क्लाइंट से परेशान, जिंदगी से परेशान, दुनिया से परेशान। अरे अनरेटेड नहीं खेलना है भाई, टीडीएम भी नहीं खेलना है यार। एक डेथ मैच हो जाए और लेट्स जस्ट प्रैक्टिस। भी हेड अच्छा अच्छा लगा था कुछ कुछ, बट कैन बी आउट ऑफ लक। But I think I need some better Match found. things. ये तो मेरा है स्किल इशू। इसमें आई प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? आई थिंक मेरा आजकल गार्डियन अच्छा चल रहा है, Death match. Warm up. मुझे ये प्रैक्टिस करना है। अगर
लिटरली इसको चलाना इतना हार्ड क्यों? मतलब एनी रीजन? They think they know pain. They can't begin to comprehend it. Fight! Coward, run. बस किल भी हो पाएगा मेरे से? No. अगर हम एक जगह बैठ जाएं तो आई थिंक I'll be able to make 4 to 5 kills. Sage killed. अरे यार ये तो इसको लगना चाहिए था. लेकिन ये गेम में I'll not leave off क्योंकि I want to practice. See भाई दोनों साइड से आवाज आ रही है अगेन.
अरे यार 120 बट 8 किल हो गया आई थिंक 2 किल दोनों साइड से आ जाए 10 kills remaining. एक और नल्ली क्या हो रहा है ये Kills remaining. One kill remaining. कैसे नहीं लगा इसको Dominating. इसका कुछ तो होगा यार 14 is okay for me the top I'll play it once again or let's actually practice aiming like for an hour aim practice 1 घंटा Match found. Death match. Warm up. Okay, no more reels. तो मेरे ईयरफोन्स ग्लिच कर रहे हैं करना पड़ेगा अबे यार Dominating. I'm no doctor, but I can patch a bullet hole or two. Let me know if you need healing. Don't give them ground. The fuck, भाई Wait, what? Taken out.
one less. अबे यार Brimstone down. कैसे नहीं यार लगन कहाँ से आवाज है Buried. अबे यार ये कैसे हम ऊपर मार रहे हैं तो गोली नीचे कैसे जा रहा है Finished. अबे भाई कैसे हो गए गार्डियन से पहले जा रहे हैं क्या Piss off. कुछ लोग का माउस इतना जल्दी चलता है ना One dead. Killed their Omen. Enough. I think वो तो Ended. कोई तो आएगा इधर से Sleep tight. Out. ओ भाई One down. Dominating.
खराब कर देगा ये लोग। मेरा किल सब चोरी कर रहा है। 10 kills remaining. भाई फक, सारा मेरा किल लोग चोरी। और अभी लेकिन कुछ टाइम नहीं नहीं। भाई कितना अच्छा था जीत। Killed their Omen. 1 minute remaining. 5 kills remaining. Dominating. हार ही गए बट ठीक है, ओवरऑल गुड था। That much. Thirty seconds left. One kill remaining. Ten seconds left. Chin up, that was good. कोई बात नहीं, it was okay. It was okay. Match found. Deathmatch. Warm up. ये तो खराब शॉट था। Let's actually start crouching again. हमको लगा इधर से गोली चला था।
डरा के बैठी थी। The dimensional fabric here is thin. I'll tear through. Fight! Hit them when they're not looking. बॉडी पे क्यों ही Bad luck. बैठ गया था। Dominating! तरफ से आवाज आ रहा है इसको। यार ये मर जाता। Back off. Lights out. 10 kills remaining. अरे यार क्राउच। You're done. यार ये अच्छा मार रही है यार ये जो भी है। 5 kills remaining. बहुत जल्दी सारा किल मिल जब सब 15 से 20 के बीच में तो सेट था 40 पे। But yeah, this was also good. मतलब less panic equals to good aim. Let's practice a bit more. Match found. Death match. Warm up. Again, Valorant, ये Vandals नहीं आते।
Ooh. If you see one of my creatures, it's a good thing, all right? We'll figure out what they do Fight. eventually. Find the weak point and break it. One dead. बे यार दोनों साइड से आ गए ओके अरे यार रेडी तो होने दो Dominating. बे रेडी तो होने दो यार कोई पीछे से आ जाएगा कोई और रिवाइव होके क्या पीछे से अरे यार क्या कर दे चारों तरफ सब लोग Out. ऐसे ही मरेगा तुमसे Buried. 10 kills remaining. इतना जल्दी यार ओ यार क्या ही बोले हैं 5 kills remaining. I give up. तो किल ही नहीं हो रहा है। पीछे मुड़ कोई ना कोई है भाई पीछे अभी हम निकलेंगे 1 kill remaining. अब क्या ही निकलेंगे
ऐसे लग रहा है कि वैलोरेंट हमको एक गेम अच्छा खेलते हुए पिच करिए, ऐसा लग नहीं रहा है। शुद्ध। I don't want to play more, but I want to play more. नहीं, I think I need to distance. Match found. Should we just keep playing games? क्या क्या और चीज स्ट्रीम कर सकते हैं? Relax. I've already thought of everything. Like, is there anything at all? जैसे तो स्मोक लेना चाहिए था, but जल्दी जल्दी में लॉक हो गया, कोई बात नहीं. Let's actually ask Cloud and hide this. हालांकि पॉज करेगा तो पढ़ा जाएगा, बट कौन ही पढ़ रहा है? What can we stream on YT with just laptop? No cam, no that kind of content. Except gaming. What? Spike rush. Mine are else is good. Go, go. there? How many spikes do they have anyway? That tech's not cheap. Okay. Placing sentry. Placing swarm grenade. Enemy A. Alarm bot out. Enemy A. Placing swarm grenade. Watch out. Why do I feel पीछे रहने में ज़्यादा हो रहा है? और इस तरफ से लोग आएगा. Go, go, go. इधर चला गया सारा. Bot coming back. Recalling my bot. Spike planted. Enemy attacker spawn. Down. Need healing. Variable removed. One enemy remaining. Need healing. Enemy B. Reloading. Time to jump. Decoy. Reloading. Reloading. Oh, no, no. For you don't deserve my heart out. Placing alarm bot. Now I know how annoying my healing can be. Yay! Scoping practice. I'll cut through. Enemy spotted A. Hi! I'm pissed! Placing sentry. Placing swarm grenade. Opponent killed. Placing alarm bot. Place turrets destroyed. Found them. Don't get up. Swarm grenade out. Finished. Enemy spotted. Last player standing. One enemy remaining. My ult's ready. I'll handle this. Nice.
I'm back. 30 seconds left. Clutch. So it's time to jump. Decoy. Last round in the half. Oh, the cool kid in class has some brains too. Impressive. Let's push out. Yes. Placing swarm grenade. Placing swarm grenade. Turret out. Alarm bot out. Help. Help. Someone's in attacker spawn. Decoy. Here. Here. Help. Headshot. My ultimate is ready. Last player अरे standing. यार 30 seconds Anyone left. else? Oh yeah! Monster on the Spike loose! planted. One Sweet. enemy My remaining. ult's ready. Yeah. लकी हो गया ये थोड़ा सा इससे तो अंदर आता और Cutting through. Switching sides. Match point. Oh, almost done? Cool. cool. Yes. Taking point. Yeah. The defense, could be better. Cutting through. Decoy. Enemy B. Placing alarm bot. Placing sentry. Spikes down. Placing swarm grenade. Bot coming back. I'm out of here. Reloading. One down. Enemy B. Turret down. Alarm bot out. One enemy remaining. I'm out of here. Attackers win. What did I say? Don't mess with me. Out. Placing swarm grenade. Nice. It was okay. It was okay. आज सारा फॉर्म खेलेंगे आज हम रोटेट भी खेलेंगे कॉम्पिटिटिव चोट इसके बाद एक्चुअली एस्केलेशन खेलते हैं हाँ तो क्लाउड का क्या आंसर रहा लेट्स सी कोडिंग स्ट्रीम्स ओके आई नो Match found. writing streams working on stories scripts or blogs while chatting with viewers okay teach people how to use programs like okay Warm up. so my issue is
My issue with other forms. Oh, nice. Reloading. हाँ तो मेरा इशू है ये कि I can't keep it very structured. तो जो स्ट्रक्चरिंग वाला चीज़ आ जाता है ना वो मेरे से नहीं होगा. Fight! Close and timeout. Try again. You're done. There. Uh-huh. There. Got 3. 4. One less. ये अभी प्रैक्टिस किए थे कुछ तो आना चाहिए ये कहाँ से आ गया भाई भाई कैसे हम तो छुप गए थे Too slow. Next. There's that. Got 3. No chance. क्या कर रहे हैं Reloading. 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 कूद के मार रहे हैं क्या था ये seriously Too bad. So close. Sorry, little guy. I don't think so. लेकिन मेरा गार्डियन अच्छा चल रहा था Reloading. Die. should have waited और जाना ऐसा तो
Stand aside. Stay down. हेल्प चाहिए. Bye. Wie geht's, mein Lieber? Na. Next. Shame. Finally. Redundant. Reloading. Yep. Night night. Sachi. One down. I don't think so. You Deficient. lose. Reloading. Next. Reloading. Reloading. There. Over there. At 4. Has been. Too slow. Go away. I will again. It was good. It was still good. एक स्विफ्ट प्ले खेल लिया जाए लास्ट गेम. सो इसमें से अपन एक्चुअली ये तो कर ही सकते हैं. Match found. तो लेट्स एक्चुअली डू समथिंग. इसको इधर ही छोड़ो एंड लेट्स फाइंड गुड गुड एक एजेंट सेलेक्ट लिया जाए. यहाँ पे आई थिंक नहीं स्मोक हो गया. ये सही रहेगा. Nothing stays hidden from me. Nothing. So let's find website designs. So it's not like I know everything, yeah, but I know stuff enough. Actually, डॉकर के बारे में भी और पढ़ना है. डॉकर लाइक लर्निंग कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, सही रहेगा. ठीक है, मर गया मादर चौथ हमारे साथ खेल रहे हैं. Relax, settle down, I got this. And I'm not leaving until we're done out here, yeah? Oh, this is a nice spot.
हाई चांसेस है बी पे ही आने का शुरू में. So let's set up on B. वाह आते ही डिस्कनेक्ट हो गया. नाइस. Yes, this should do. Cage triggered. Help. Wow, my eyes are caught one. Goodbye. Dizzy's up. अबे क्या कर रहा है? Clap. Gone. क्या कर रहा है? Spike planted. One enemy remaining. हो जाएगी. अबे ए जाएगी. Revealing area. ये क्या देख लिया भाई? क्या कर रहा है? Take flight. Beep, beep, beep. Enough of that. एक्चुअली अगर यहाँ पे रीमेक लिखें नहीं होगा. यहाँ पे सब लोग नहीं करते. This goes here. थोड़ा और मिड में. That goes there. Dream big, make it happen. ठीक है. Found them. Someone's A. Enemy spotted A. Careful now. Taken out. Someone's A. Spike down B. यार रेना ना हर बार मिल जाती है. छी भाई एकदम ही नूब है. Revealing area. Spike planted. कहाँ मारा है ये अपना तीर? क्या कर रहे हैं ये? Last player standing. भाई तुम लोग सब नए नए आए हो क्या? One enemy remaining. Concentrate, Sova. Clutch. ये क्या? क्या? Phoenix, our little star. Keep that furnace burning, okay? My ult is ready. जल्दी करना पड़ेगा. पिछले बार लेट हो गया था. Yes, this should do. Let's mess him up. This goes here. Oh, this is a nice spot. Found them. Enemy spot. I am the hunter. Found you. Cage triggered. It's you and me. Trick shots.
Spike planted. Flash is ready. Is it off? It's off. Last round before the switch. Save nothing. That goes there. This goes here. अरे नहीं, that doesn't go here. Ah, this is a nice spot. Cage triggered. There they are. Enemy spotted. Mid. No more charges left. Enemy spotted. Mid. My ultimate's ready. Spike down B. Spikes B. Come on, let's go! One enemy One remaining. dead. You tried. I'd stop that. Switching sides. Boring हो जाता है लेकिन सही. An injured dog bites hard. Careful. Someone's A. Spike down A. अरे गधा कहीं का flash. Last player standing. Suicide कर रहे हैं. Remember, the Rift Walker is over there. Never think you're safe. मेरे mid to है भाई, तुम पहले खेलना सीखो. I got you, bruv. That goes there. Yes, this should do. Here. नहीं निकलना चाहिए था. अबे क्यों का यूज करना भाई. Spike planted. नया नया सब सही. Sit down. पीछे पीछे पीछे. Last player standing. Careful now. अरे डिफ्यूज हो रहा है. अरे डिफ्यूज हो रहा है. Sorry, bro. भाई. One of my cameras is broken. The Oh, only way wait. out is. Okay. It's fine. Thrash is ready. The only way out is. पीछे रह गए खेलो. मारो. मैच उधर लो. चलो. हीरो. This is a nice spot. Ah,
This season Here. is for Are standing ahead. Spike down mid. Shock dart. Take flight. The hunt begins. Last player standing. Defeated. My ult is ready. Match point. This is crazy. It feels like we've been doing this forever. Anyone else feel like that? Just me? Okay. So Hey, other literally me. Sorry in stream- advance. a stream full of disappointment. Nice. Cage triggered. Enemy B. Here. Bunch of guys, eh? Up and away. Someone's there. Cage triggered. Spike planted. Saw you, little homie. One enemy remaining. Careful now. I hate visiting underground doctors. Sudden death. Okay, okay. देखते हैं लास्ट मैच हो पाता है नहीं हो पाता है इस बार तो ये जीता है झूठू On my mark. Bunch of guys mid. Go get him, buddy. Plant a spike. Cage triggered. Here. कैसा छूतिया Spike planted. गलत ही लगा कोई बात नहीं There they are. Got him. Flash is ready. One enemy My remaining. eyes are better than yours. Attackers win. Back to my workshop. Still much to be done. बंदूक कहाँ गया So let's end the gaming part of the stream and let's change the overall thing on what
we were doing. So Docker सीखना है और क्या क्या सीखना है. Let's open sticky notes. So let's actually do learning streams. Docker, let's jump into Web3 properly. Or let's, sorry, AIML or cyber security. See, with Ryzen AIML, there are two things that we can do. Two, nahi, three. AIML cannot, actually can make Web3 or as well, but abhi ke liye I don't think so it is that trusted to make Web3 apps, D apps. developer.hdfcbank.com वहाँ पर भी ट्राई कर रहा है एक्सेस का. तो करना भाई, कॉल कर करके बताया क्या पागल. I hope this stream doesn't reach my client. So Web3 is something that I want to learn. Web3 plus Docker. Want to learn. कैसे बोलता है ना चूतिया. AI मतलब with rise in AI tech and AI taking all over. I think AIML and cyber security, ये दोनों जॉब्स ही सिक्योर है एट द मोमेंट, क्योंकि AIML इज नीडेड टू मेक मोर सच AIs. एंड लाइक AIML में वो जॉब नहीं है कि ओपन AI का API उठा के यूज़ कर लिया और उसको बोल दिया कि ये हमारा AI है. नॉट टॉकिंग अबाउट दोस स्टफ एट ऑल. तो वो नहीं है. सेकंड थिंग इज साइबर सिक्योरिटी. साइबर सिक्योरिटी ऑब्वियसली जब AI एप्स लिखेंगे तो पीपल वुड नॉट वांट डेवलपर्स टू टेस्ट इट आउट. वो चाहेंगे कि साइबर सिक्योरिटी वाले लोग आए और ऐप को टेस्ट करें कि AI ने जो एक्चुअली लिखा है वो सही भी है या नहीं है. क्वालिटी चेक के लिए हो सकता है टॉप लेवल के डेवलपर्स वगैरह रखे जाए, बट एक सैचुरेशन आ जाएगा ना, तो उसके बाद काइंड ऑफ सिर्फ सीनियर लेवल के डेवलपर्स बचेंगे. जूनियर लेवल पे ज़्यादा लोग नहीं होंगे. जूनियर लेवल पे AI से काम करवाया जाएगा. तो इफ़ यू हैव द स्किल सेट ऑफ अ प्रो SDE, then only you can survive as a developer. ये talking about like 5 to 10 years in future. So cyber security is the only field जिस पे लोग इंसान पे ही ट्रस्ट करना आई थिंक ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि AI कैन ट्राई टू हैक इट, बट कितना ही भरोसा करोगे AI पे. If AI gets smarter and smarter, तो आई डोंट थिंक सो कि कितना भी स्मार्ट हो जाए लोग चाहेंगे कि एक AI से लिखवाया हुआ ऐप या वेबसाइट एक AI से ही जाकर चेक करवाए. तो साइबर सिक्योरिटी इज काइंड ऑफ, इसमें भी थोड़ा हाई स्किल सेट तो चाहिए होगा आई थिंक. तो थोड़ा हाई लाइक मिड लेवल skill set to survive. I think all developers should try to focus on this as well. Next thing is AIML. तो AIML तो यार जिसको AI बनाना आता है वो काम करेगा. ये भी अगेन मिड लेवल से ऊपर की ही बात है, क्योंकि I think AI will be able to make more AIs in a few 10 to 15 years. मिड लेवल तो इसमें भी चाहिए. So let's actually acquire all of these things on stream.
क्योंकि अकेले बैठने में उतना मज़ा नहीं आता है। आई थिंक अगर कोई देख भी नहीं रहा है ना, विथ वन वॉचिंग, जो कि खुद हम ही है, आई थिंक अगर ऐसे बड़बड़ाते रहेंगे तो इट विल बी जस्ट बेटर, बैटर। गेट डॉकर, व्हाट इज़ डॉकर, अच्छे से समझना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में क्या है, कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स, बिल्डिंग इमेजेस, कंटेनर्स। आई थिंक इसका डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है। तो एक एक ये है। फिर यहाँ पे आई थिंक डॉकर ब्राउज बाय सेक्शन, ये क्या है, आई थिंक थोड़ा इन डेप्थ है। डॉकर कंपोज हब, अच्छा। आई थिंक दिस इज़ मोर अबाउट लर्निंग द टूल। जो यहाँ पे नीचे है ये सारा थोड़ा टूल का इंफॉर्मेशन होगा, फीचर्स एंड ऑल। ओके, सी एल आई, प्रोडक्ट्स, प्लेटफॉर्म। हाँ, दिस इज़ बेसिकली, ये जो पूरा सेक्शन है ये है मेन डॉकर का, जो भी है लाइक लर्निंग यहाँ पे ही है। सो इंट्रोडक्शन, ओके। आज लेट्स एक्चुअली लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग डिफरेंट। एमसीपी सर्वर क्या है? आई नो व्हाट दिस इज, बट हाउ डू वी डेवलप अवर एमसीपी सर्वर? ये तो यार, उसमें कैसे एमसीपी लगाना है वो है। We'll build a simple MCP whether server and connected to a host. Okay, cloud or cloud for desktop. Okay, we'll start with a basic setup and then progress to more complex use cases. We'll build a server that exposes two tools, get alerts and get forecasts. Then we will connect the server to an MCP host, in this case cloud for desktop. Okay, cloud say I have also used MCP in this one, like settings कहाँ है? So if you go here, नहीं, डेवलपर, हाँ ये फाइल सिस्टम एक्चुअली एमसीपी से ही आया हुआ है। लोकल एमसीपी सर्वर सेटअप करना पड़ा था, बट हाँ ठीक है, सर्वर सेटिंग अप तो इज ओके। लाइक हाउ डू वी बिल्ड एन एमसीपी सर्वर, वो है यहाँ पे, आई थिंक होगा। You will extend cloud for desktop so that it can read from your computer's file, ये तो कर ही चुके हैं। For client developers, okay, get started building your own client that can integrate with all MCP servers. In this tutorial, you'll learn how to build an LLM-powered chatbot client that connects to MCP servers. It helps to have gone through the server quick start that guides you through the basic of building a fast server. Okay. This is all nice. हाँ ओके, तो ये अपना एक नया बुकमार्क बनाते हैं। कैसे ऐड करते हैं बुकमार्क? इधर से करते हैं, बट वहाँ से नहीं होता है क्या? स्ट्रीम एंड लर्न। और हाँ, एक और चीज़, लेट्स ऐड दीज थिंग्स। स्लो हो जाता है थोड़ा, कोई नहीं। तो एक तो हो गया अपना एमसीपी सर्वर का नॉलेज।
सेकंड जो आजकल काफ़ी चला हुआ है वो है नेटन एआई टूलिंग। ये क्या बोलते हैं, एआई ऑटोमेशन टूल। सो ये भी सीखना है, और आई थिंक आई शुड स्टार्ट विद दीज वंस देन मूव टू दीज एंड देन दीज, या फिर साइड बाय साइड भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मूड। अभी मेरा बहुत मन कर रहा है ये दोनों एक्सप्लोर करने का। तो एक्चुअली वी विल रीड दिस मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एमसीपी। ओके, यहाँ भी है वैसे तो, ठीक है। we will start with this with these we will start with this uh, we will start with this yeah, YouTube as well, but I think एक बार पहले we should go to YouTube. Building agents with Me, MCP. my name is Mahesh, and I'm on the Applied AI team at Anthropic. Really excited to see a very full room, and very excited that you chose me. Let's actually understand what MCP is. Everyone is talking about MCPs. It's gone completely viral. But the reality is, most people have no idea what MCPs are and what they mean and what are the startup opportunities associated with it. So, in this episode, I brought Professor Ross Mike, who is probably the best explainer of technical concepts in a really easy way that someone who's non-technical can really understand. I brought him on. He explains it beautifully in such a short amount of time. And if you stick to the end, you'll hear a couple of his startup ideas that incorporate MCPs. So enjoy the episode and see you soon. All right. Well, we got Professor Ross Mike on the pod. And the reason why we have him is because I don't know what the hell MCPs are, and I've been seeing it on X, and I need a succinct, clear Professor Ross Mike explanation. Yes, I've read a bunch of threads on it, and I've seen a couple of videos on it, but there's nothing like a Ross Mike explanation. So I'm here for the what do I need to know about MCPs, and that's why you're here. Thank you for coming on. I appreciate that. Thank you very much. Yeah, class is definitely in session. I'll just start sharing my screen. Okay, so understanding MCP is really important, but you'll also realize the benefits and why it's sort of a big deal, but not really at the same time. You see, one of the things in programming land that we have and that programmers love are standards. And the reason why standards are important is they allow for us engineers to build systems that communicate with each other. The most popular one that you might have heard of or you might not, and you don't really need to know the details, is REST APIs. And they're basically a standard that every company follows when they construct their APIs, when they construct their services for me as an engineer to be able to. So I went to toilet while listening to this. But ठीक है. The other thing that I'm supposed to do is let's increase this. Connect with them. Now, understanding that engineering is all about standards and having these formalities we follow to make life easier, when we think of in the context of an LLM, I want you to understand this one important thing. LLMs by themselves are incapable of doing anything meaningful. What do I mean by that? If you remember the first, ChatGPT 3, or was it 3.5? I'm not sure. But if you just open any chatbot and you tell it to send you an email, it won't know how to do that. It will just tell you, hey, I can't send you an email. The most you can do with an LLM is ask it questions, maybe ask it to tell you about some historical figure, whatever it may be, right? LLMs are truly incapable of doing anything meaningful. And what I mean by meaningful, it'd be nice if it could send me an email, if it could do some specific task on my behalf.
But the only thing an LLM in its current state is good at is predicting the next text, right? So for example, if I say my big fat Greek, an LLM with all the data it's sourced, with all its training material, will determine that the next word is. Wait, I have to see coupon code you have entered. Flying के Is चूतिया. way, right? So this is the most an LLM by itself that it could do, right? The next evolution was developers figured out how to take LLMs and combine them with tools. And you can think of a tool like an API. For example, most of us are aware where ChatGPT and these other chatbots are able to search the internet. For example, Perplexity, right? Perplexity gives you the option to chat with an LLM, but that LLM has the ability to fetch information from the internet and present that to you. The LLM itself is not capable of doing that. But what they've done is they've constructed a tool. They've given the LLM access to an external service, right? And there's plenty of these services, right? I think there's Brave Search, OpenAI offers an API now. So LLMs have started to become a bit more powerful when we connected tools to them, right? I can give you an example. Let's say every time I get an email, I want there to be an entry in a spreadsheet. Now, most of you know there are services like Zapier, NN8, or any of those automation services. If I build out an automation and connect that to my LLM, it just became a bit more meaningful. Now, that's awesome and cool, but it gets really frustrating when you want to build an assistant that does multiple things. Imagine search the internet, read your emails, summarize this. You start to become someone who glues a bunch of different tools to these LLMs. And it can get very frustrating, very cumbersome. If you're wondering why we don't have an Iron Man level Jarvis assistant, is because combining these tools, making it work with the LLM is one thing. But then stacking these tools on top of each other, making it cohesive, making it work together is a nightmare itself. And this is where we're currently at. And this, before I continue, does this make sense? This is where we started. LLMs by themselves, write me a poem, tell me about World War I. And then the second evolution is, we now have tools, right? We now have these things, these external services that we can connect to our LLM. The problem here is they're difficult. It's annoying. And as someone who works at an AI startup, Tempo, and we have a lot of tools, like for example, we do a search, you have to find an external service. You have to connect it to the LLM, and you have to make sure the LLM doesn't hallucinate or do something stupid. And believe it or not, as cool as LLMs are, by themselves, they're very, very dumb. But these tools make them just a bit more capable. So this is where we're at. Greg, we good so far? It's crystal clear. I'm loving this. Beautiful. Quick break in the pod to tell you a little bit about Sure. Startup Empire. So Startup Empire is my Sure. that they need. So you can check out the link to startupempire.co in the description. Now enters MCP. And what does MCP mean? I think the simplest way, right, without getting too technical, is I've read the threads too, and as a technical person, I appreciate it, but for the non-techie, I can assume it's frustrating. Think of it this way. Think of every tool that I have to connect to make my LLM valuable as a different language. So tool 1's English, tool 2 Spanish, tool 3 is Japanese, right? And imagine every tool, it's its own language. And it's not that there isn't a standard for how APIs work, but every service provider constructs their APIs differently. There's different information you have to pass. There's just various degree of things that you have to set up that, it just feels like gluing a bunch of different things together. Will it work? Yes, but at scale, it gets very difficult. MCP, you can consider it to be a layer between your LLM and the services and the tools. And this layer translates all those different languages into a unified language that makes complete sense to the LLM, right? So it's the evolution of LLM plus tools, but in this evolution, it makes it very simple for the LLM to connect and to access
different outside resources, right? Because that's what tools are at the end of the day. So with MCP, I'm able to connect to an outside data source, an outside database, maybe a tool like Convex or Supabase, right? Imagine I just tell the LLM, you know what, create me a new entry in my database. And it's connected to my database via MCP, and it knows exactly what to do and how to do. In the second evolution, LLMs and tools, there's a lot of manual work that goes on. There's a lot of step-by-step planning that you have to do, and there's a lot of edge cases where it can fail. And this is why, again, none of us, as exciting as the space is, none of us have a Jarvis level assistant yet. It feels like we're there and we're close, but this system makes it so that it's very difficult. And what's frustrating is this. Imagine, let me think of a simple service, a simple tool. Imagine every time a Slack message comes, your LLM reads that Slack message and it shoots you a text, right? Sounds pretty trivial. Here's the frustrating part. Imagine Slack updates their API or the text service updates, makes a change. And let's say that service is connected to other services, or you have some sort of like automation step-by-step thing that you've planned. It becomes a nightmare. It becomes terrifying. And this is why even in the age of LLMs, good engineers will still get paid because stuff like this exists. But what MCP does, it unifies the LLM and the service, right? It creates this layer where the service and the LLM can communicate efficiently. Now, let's get into some practicality. You can think of the MCP ecosystem as follows. एक सेकंड, तो लाइक अगर ठीक से सोचा जाए तो एलएलएम है एक एंटिटी, एमसीपी एक बीच में बस। बट अगर अभी कंपैरिजन किया जाए तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस कैसे है? लाइक ये सर्विस डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहा था एलएलएम से, ये टूल। ओके, नहीं नहीं नहीं, ओके आई गॉट इट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टूल ट्राई कर रहा है दो चीज़ को कनेक्ट करने का, एआई को एंड एक सर्विस को। तो एक टूल मैनेज हो रहा है, फिर दूसरा टूल मैनेज हो रहा है, तीसरा टूल मैनेज हो रहा है, तो सारा टूल एक इंडिविजुअल कनेक्शन है बिटवीन अ सर्विस एंड एन एलएलएम। बट एमसीपी क्या कर रहा है, ये चीज़ को सिंप्लीफाई कर रहा है, लाइक एलएलएम के बिहाफ में ये एमसीपी हर सर्विस से कनेक्ट कर सकता है डायरेक्टली, नो नीड ऑफ टूल्स। एंड देन उस सर्विस के रिस्पॉन्स को या फिर जो भी आगे का प्रोसेसिंग है वो डायरेक्टली एलएलएम इससे इसके थ्रू सब कुछ हो सकता है। लाइक बेसिकली इंस्टेड ऑफ हैविंग डिफरेंट टूल्स फॉर कनेक्शंस, वी हैव एन एमसीपी सर्वर and this will connect to all the services and उसके आगे फिर right, it creates this layer where the service and the LLM can communicate efficiently. Now, let's get into some practicality. You can think of the MCP ecosystem as follows. एक सेकेंड, आई हैव एक्चुअली अ पीआर on a open source repository. The branches टू commits merge कर दिया क्या? नाइस, कब किया? अभी अभी मर्ज किया, ओके। हाँ, मेल भी आ गया, एक बार चेक कर लेना। एक इसमें था लाइक वेट, इसका प्रोडक्शन कहाँ पे है, ये रहा ना। इसमें एक PBIX एनालाइजर
ये रेंडर की वजह से काफ़ी स्लो है, तो इसको आई थिंक वी कैन ऑप्टिमाइज एंड लाइक a lot more can be optimized here. और सैम्पल डेटा वाला जो so this will be my open source optimization. It's actually I can show this chat as well. LinkedIn पे ही हो रहा है वैसे भी. आप उसमें बस ऐड कर देना with नहीं ऐड करने का तो लिख दिया कर देना with access नहीं क्या बोलते हैं with EC2 permissions एंड ये वाला जो रेपो होगा कौन सा एनालाइजर है वेट PBIX एनालाइजर एनालाइजर उसका एक्सेस या फिर अगर सेम रेपो में आपको मिलेगा सेंड पे क्लिक ही करना पड़ेगा क्या कोई नहीं चलो ठीक है थोड़ा टाइम लगा बट आई थिंक दिस इज़ मोर यूजेबल नाउ पहले फ़ोन पे बिल्कुल यूजेबल नहीं था दिस इज़ वेरी वेरी यूजेबल नाउ अबे ये लॉक से हो क्या रहा है हमको तो समझ ही नहीं आया कोई नहीं इसमें काफ़ी ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है अभी इनफैक्ट इसका आई थिंक सब्सक्रिप्शन भी इजीली क्या बोलते हैं तोड़ने लायक होगा आई थिंक इसका जो सब्सक्रिप्शन इम्प्लीमेंटेड है इसमें इट शुड बी इजी टू ब्रेक
I think this is looking pretty great in phone as well. अब पहले it was not like पहले अगर ये वेबसाइट तुम खोल लेते तो लगता 2010 का है, मतलब कि ये AI से ही बनाया हुआ है, बट हाँ इट्स ओके। राउट वगैरह में इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, पावर बीआई मॉडल्स ओके, दिस ये तो फिर भी ठीक है। So let's move back to our this is the code actually, 234 commits भाई साहब, लवेबल से बनाया है ओके। नाइस। You have an MCP client, you have the protocol, you have an MCP server, and you have a service, right? An MCP client is something like Tempo, Windsurf, Cursor, and they are basically the client-facing side, the LLM-facing side of this ecosystem. The protocol, again, is that two-way connection between the client and the server. And the server is what translates that external service, its capabilities, and what it can do to the client. And that's why between the MCP client and the MCP server, there's an MCP protocol. But here's the fascinating part, and this is why I think Anthropic, they were playing 3D chess when they built this, is the... Wait a second, I'm getting more messages. थोड़ा पीछे करके ही देखना सही रहेगा। People are really shit, to be honest. सब लोग इतना बढ़ावा देते हैं ना चूतिया चीज़ों को, और इतना फालतू की चीज़ों को इतना ओवर हाइप करके बताते हैं सोशल मीडिया पे जस्ट टू लुक कूल। हेट्रेड है भाई, लिटरली। Right, it creates the MCP ecosystem as follows. You have an MCP client, you have the protocol, you have an MCP server, and you have a service, right? An MCP... Who watching now? Oh my god. भाई कौन ही हो सकता है दूसरा बंदा? MCP client is something like Tempo, Windsurf, Cursor, and they are basically the client-facing side, the LLM-facing side of this ecosystem. The protocol, again, is that two-way connection between the client and the server. And the server is what translates that external service, its capabilities, and what it can do to the client. And that's why between the MCP client and the MCP server, there's an MCP protocol. But here's the fascinating part, and this is why I think Anthropic, they were playing 3D chess when they built this, is the way this is architected. The MCP server is now in the hands of the service provider. So if, let's say, me and Greg run a dev tool company, right, where maybe we're doing a database, right? Like we're like, listen, we're going to build the best database company in the world, and we want people's LLMs to have access to this database. It is now on us to construct this MCP server so that the client can fully access this. So Anthropic, in a way, sort of said, listen, we want our LLMs to be more powerful, more capable, but it's your job to figure this out. And this is why you've noticed all the external service providers are now building different MCP servers, or building out repos and all this stuff, right? So this is a big deal in a sense where LLMs are going to be more capable.
But from a technological perspective, all they did was create a standard that it seems like all companies and all engineers are going to agree upon. Because you can construct any system, any API, however you please. The problem is if you want to scale, you want to grow, you want other developers, other businesses to connect and work with your service, it has to be in a fashion that makes sense for them. Imagine if all of us just spoke different languages, but standards allow us to communicate in a way that makes sense to all of us. And MCP is that for LLMs, because LLMs by themselves are not that capable. They're just they're systems that have great predictability and they know how to predict the next word. But when you add this MCP protocol as a whole, you now have a way for it to be capable of doing important stuff. Now, understanding all this, it's not all sunshine and rainbows. There are some technical challenges. If you notice, if anyone has set up an MCP server on any of their favorite MCP clients, it's annoying. There's a lot of downloading. You have to move this file. You have to copy this, that, and the third. And it's a lot of local stuff. There are some kinks that have to be figured out. But once this is figured out or finalized, polished, or maybe they update the standard, or maybe someone comes up with a better one, we start to enter a world where LLMs start to become more capable. And that is literally all what MCP is. Just making LLMs more capable. We're doing that with tools right now. It's kind of working. But MCP seems to be the next evolution. I think, Greg, I saw your latest video. Manus is a great example of number two. They have tons of tools, and kudos to them. They've engineered it well in a way where they work well cohesively. I didn't get to try it out, so I'm just looking at what people have done. But I can tell you this: it's a lot of engineering hours. It's a lot of one change happened, something broke, someone's on call and not sleeping. But with MCP, it's structured in a way where if we all follow this standard, the LLM will have access to everything it needs, and we will all be happy users. So in short, that is literally all what MCP is. It's not Einstein's fifth law of physics or anything crazy like that. It's literally a standard for LLMs, and it's exciting. It's something to be excited about. And yeah, I hope that clarified. I just kept rambling, so I apologize for that, Greg. No, this is exactly what I wanted. I want to end on one question for you. So this is now clear to me, crystal clear to me, what MCPs are. But my question is, well, before I even ask my question, every time there's been a popularized protocol, for example, HTTPS or SMTP, examples like that, there's been a lot of big businesses that were created on top of it. And there's been basically this like, why now? Why this just opening of opportunities. Yeah. The average person listening to this podcast is building out their ideas. Does this matter or at all for that person? Like, yeah. I think that's a great question. I think if I were, so I'll speak to the technical and the not technical. To the technical. एक सेकंड कॉल आ रहा है हाँ स्ट्रीम हाँ भाई 2 वॉचिंग आ रहा है पता है तुमको एक तो हम ही है एक पता नहीं कौन है हाँ हम गेम नहीं खेल रहे हैं अरे बहुत गेम खेल लिया हम लोग 1 घंटा ज़्यादा खेल लिया मन नहीं कर रहा अरे हम कौन सा उस टाइम खेले जो बहुत बढ़िया खेले खराब ही खेले हाँ तुम 7 बजे पहुंचता हमको लगा अब 7 बजे के बाद थोड़ी खेलेगा तो 9 बजे ठीक है 10:30 पे आते हैं ठीक है
Yeah. So feels good to be appreciated for some good work. So I just saw this notification. हाँ अच्छा तो लगता ही है, अब इसमें तो कोई डिनाई है नहीं. So this came from the great Sahil Chaudhary. Yeah, so it was good. I'll screenshot this. Hmm. And I'll keep the WhatsApp somewhere else. That would be better. I'll send it to my friends. पता नहीं यार, खुशी तो हो रहा है. खुश होना चाहिए, I don't know. But हाँ, I think I should find more open source projects like this one and do something for it. वो भी कर सकते हैं, but अभी let's focus on MCP. इतना 20 मिनट के वीडियो में इतना कुछ हो रहा है, like I think we should watch this as well. ये अच्छा अच्छा समझाते हैं ये भी. With MCP plus नहीं चाहिए यार, what are MCP समझना है Technical, पहले. there's a lot of things that a technical person can do here. I just don't have time, Greg. But one thing I was thinking of was like an MCP app store, and I'll just give this idea out for free because this podcast is all about ideas. Basically, there's a lot of these repos out there of MCP servers, and it'd be cool if someone can go on a site. I even bought the domain. It does nothing, but again, please, anybody like steal this idea. I bought the domain, and it'd be cool if someone could go on like look at the different MCP servers there. They see the GitHub code and whatever, and they can click like install or deploy, and that server is deployed and gives them a specific URL, and then they can paste that in an MCP client and work that out. So for the technical person, if you make millions, all I ask is just $70,000. But for the non-technical person, what I would really focus on is I would just stay up to date with the platforms that are building out MCP capability and just see where the standards are going, right? Because like you said, when these standards are finalized, I don't know if MCP has fully won. I think it needs to be challenged. Or I don't know if Anthropic is going to make an update. We don't know. It's very early. But I would say keep very close attention to what the final standard is going to be. Because once that standard is finalized and all these service providers start to build out their MCP or whatever thing it is, you can now start to integrate much seamlessly and much easier, right? This is why, again, every week there's a new chatbot interface with new tools and it wins. Because this part, step number 2, is not easy, right? Especially making it cohesive and making it work fast, right? Like I can sit in 2 hours and build something like this, but building out the user experience, making it flawless, limiting the hallucinations, it's very, very hard. I mean, this is a lot of the work we do at Tempo, but this makes it so that integrating is a lot easier. And you can think of these as like Lego pieces that you can continue to stack to stack. So for my smart and wise business owners, startup ideas, podcast enjoyers, I would really just keep a close attention, right? I think even for myself, I don't think with this MCP stuff, we're at a place where any shots can be fired that make any smart business decision. But this is one of those things where you sit and you watch and you're just observing and learning. And when the right thing at the right time happens, you strike. So I don't see any crazy business opportunities right now for a non-technical person. Even for a technical person, like imagine if OpenAI comes with a standard tomorrow and we all just shift to that, right? It's very early stages, but I think understanding how this works means you'll understand how the next thing works. And when that becomes finalized, you hit the ground running. Amen. All right. Ross Mike, Professor Ross Mike, there's no one like you. We'll include in the show notes where you can follow. Okay, thank you. Let's see the next video. MCP server. See, the first part of learning is you never just rely on one source of knowledge. You have to like go again and again and again and visit it multiple times to understand it fully. Abhi, even after watching this video, I'm planning, I think I should watch some of the recommendations. I don't know about Piyush Garg, like I have seen his videos, but I don't know. I think ये सही रहेगा. किलर विलर नहीं जानना है, कोडिंग हरी भैया. I think let's go with this one as well. After watching this, I'll watch these two as well. Let's see. MCP server. MCP server.
आपने ऑलमोस्ट हर जगह एआई के अंदर, एजेंटिक एआई वर्ल्ड के अंदर एमसीपी सर्वर्स की बात होते तो सुनी होगी, बट समझ में कुछ आ नहीं रहा होगा एमसीपी सर्वर होते क्या हैं, कैसे हैं। बहुत सारे सिमिलर एग्जांपल्स भी आपने देख लिए होंगे, अब तक वीडियोस भी देख लिए होंगे। इस वीडियो के साथ आपको 100% गारंटी है कि एमसीपी सर्वर समझ में आएगा, क्यों इसके बारे में बात करी जा रही है, क्या इसका पोटेंशियल है, कैसे ये बना जाता है, अंडर द लाइन, बिहाइंड द सीन, सब कुछ समझेंगे। मजा आएगा आपको बहुत। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने ही वाला है, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि चीजें काफी डिस्कस कर रहा हूं मैं इसके अंदर, लेकिन फन होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर चलाते हैं और खुद की वीडियोस बनाते हैं कि क्या क्या चलता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आप बनाना चाहेंगे किस तरह का सॉफ्टवेयर के बारे में, हमसे बहुत सारा टेक्स्ट इन द सीन डिटेल देंगे। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और चलिए आपको लेके चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारे डायग्राम्स है, बहुत सारा टेक्स्ट है, एक-एक चीज़ करके सबके बारे में बात करेंगे और आपको एमसीपी 100% इस वीडियो के बाद में समझ में आने वाला है। देखिए, सबसे पहले हमारी जो चर्चा है, पूरी की पूरी चर्चा है, वो स्टार्ट होती है एलएलएम से। अगर आप एलएलएम नहीं जानते हैं, तो एलएलएम होते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जैसे कि चैट जीपीटी है, जेमिनी है। इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास क्या है, ये एक्चुअली में फैंसी हैं, टेक्स्ट कंप्लीशन सॉफ्टवेयर्स हैं बेसिकली। ये क्या कर सकते हैं, आपका नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब हमें तो लगता है यार ये तो आंसर करता है, नहीं, ये आंसर नहीं करता है। ये एक्चुअली में फैंसी प्रेडिक्शन मॉडल्स हैं, जो कि प्रेडिक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस निकल। Why does it sound like the same video that I watched right now? Like एकदम exactly उसी चीज से शुरू किया है with the same examples. I think इसने भी देखा होगा, and it's good that he's translating it to make other people understand it more clearly, but थोड़ा और निकल गए हैं। बेटर इंटरनेट पे जितना डेटा हो इन्होंने देखा, सकता उसके था। बेसिस पे ये प्रेडिक्शन करते हैं और करते ही चले जाते हैं, और इसी तरह से आपको आपका आंसर मिलता है। तो ये है हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं, ये हमें लगता है बाहर से कि बहुत मैजिकल है, सब कुछ कर सकते हैं, बट नहीं, सब कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या फिर आम भाषा में कहें तो टेक्स्ट का आंसर कर सकते हैं। अब ये क्या कर सकते हैं, अगर आपने इसको कहा कि एक ऐसे लिख दो, ऐसे लिख देगा, जिस टॉपिक पे चाहिए उस टॉपिक पे ऐसे लिख देगा। लेकिन क्या उस ऐसे को ईमेल कर सकता है? नहीं, वहाँ पे एआई काम नहीं करता है, क्योंकि इसको पता ही नहीं ईमेल कैसे करना है, जीमेल से करना है, याहू से करना है, आपकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी से करना है, पर्सनल ईमेल आईडी से करना है, किसको करना है नहीं पता। ठीक है, क्या ये क्वेरी लिख सकता है कि डेटाबेस के अंदर जाओ, ये सब पता लगाना है, कंबाइन करना है, वेयर क्लॉज लगाना है, एग्रीगेशन पाइपलाइन लगानी है? हाँ, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बहुत अच्छे से कर सकता है, प्रेडिक्ट भी कर सकता है। क्या ये क्वेरी रन कर सकता है? नहीं, सैडली ये काम नहीं कर सकता। तो फिर कर्सर ने कैसे किया? कर्सर के अंदर हम देखते हैं प्रॉम्प्ट डालते हैं, वो सिर्फ ना कि प्रेडिक्ट कर पाता है या सोच पाता है क्या करना है, बट उसको कर भी पाता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट था, और ये आज की डेट में भी बहुत ही फैंसी टेक है, क्योंकि इस पे बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, इनफैक्ट बात ही नहीं कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे, हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहले जो आपने देखा होगा, इसका वन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, इस इम्प्लीमेंटेशन को मैंने #1 लिखा है। क्यों? अभी समझ में आएगा रीज़न। सबसे पहला जो आया वो आया परप्लेक्सिटी। अगर आपको नहीं पता है तो ये छोटा सा टूल है जो कि इंटरनेट पे जाके और चीज़ों को सर्च करके उसके बारे में जवाब दे देता है। तो सबसे पहली जो कैपेबिलिटी दी गई उसको इंटरनेट सर्च करने की दी गई। उसको हमने कहा #1। उसके बाद आपने जो देखी सेकंड कैपेबिलिटी, वो देखी कि कोड फाइल्स एडिट कर सकता है, उसको हमने कहा #2। अभी जो #1 है और #2, इसको मैं टूल्स बोल देता हूँ, वरना कब तक # करता रहूँगा। तो टूल 1 जो बना वो इंटरनेट सर्च करने के लिए बना, टूल 2 जो बना वो एडिट फाइल करने को बना। अब इसी तरह के हो सकते हैं कि और भी टूल्स बने, प्रीमियर प्रो एडिटिंग के लिए, फिग्मा फाइल्स बनाने के लिए, मोंगोडीबी के अलग, पोस्टग्रेस के अलग, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। बट ये टूल्स बन तो गए हैं, पर ये टूल जब बने तो कैसे बने? कोई प्रोटोकॉल था, कोई स्टैंडर्ड था? जैसे आप जब एपीआईज बनाते हो, रेस्ट एपीआईज बनाते हो, एक स्टैंडर्ड है कि जेसन रिस्पॉन्स आएगा, स्टेटस कोड्स आएंगे। यहाँ तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। हाँ, अभी तक तो नहीं था। ये स्टैंडर्ड ही डिफाइन करते हैं हम एमसीपी के अंदर। अब क्या है कि अभी तक आपने देखा कि हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो है कि आपके पास एक क्लाइंट है। वो क्लाइंट हो सकता है कर्सर हो सकता है विंडसर्फ हो। ये क्लाइंट क्या करते हैं, एक एमसीपी सर्वर से बात करते हैं। अब अभी तक इन सर्वर का नाम एमसीपी सर्वर नहीं था, ये एक रेगुलर सर्वर था। अब ये सर्वर कर्सर का भी हो सकता है, विंडसर्फ का भी हो सकता है, लेकिन आज के बाद इन सर्वर्स को ज़्यादातर एमसीपी सर्वर ही कहा जाएगा। इन सर्वर्स ने एक टूल डिज़ाइन किया कि हम टूल डिज़ाइन करते हैं, उसके अंदर क्या होगा, जो भी आप प्रॉम्प्ट दोगे, हम उस प्रॉम्प्ट के साथ साथ आपकी कुछ फाइल्स भी ले जाएंगे और उन फाइल्स को समझने की कोशिश करेंगे कि अभी तक प्रोजेक्ट कैसा है, आप क्या करना चाह रहे हो उसके अंदर। फिर जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे, उन इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट भी करने की कोशिश करेंगे। कैसे? एक फाइल राइट करने का एक छोटा सा टूल बनाएगा कि इस तरह से एक फाइल क्रिएट कर दो, तो ठीक है जी। फिर आया कि रीड द डॉक्स, मतलब इंटरनेट पे जाके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो, बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद आया कि आपके कंसोल से एरर भी पढ़ लो। इसी तरह से आपने देखा, जब जो लोग भी कर्सर शुरू से यूज़ कर रहे हैं या विंडसर्फ यूज़ कर रहे हैं, वो एक-एक करके आपको फंक्शनैलिटी दिए जा रहे हैं। ये फंक्शनैलिटी है क्या? ये टूल्स डिज़ाइन कर रहे हैं आपके लिए। ऐसे ही टूल्स हो सकता है मोंगोडीबी के लिए हो कि आप मोंगोडीबी का अपना एनवायरनमेंट वेरिएबल्स वगैरह, कीज़ वगैरह दे दो, और जो भी मोंगोडीबी में करना है आप रेगुलरली बस बोलो, हम कर देंगे। बट अपने आप मैजिकली थोड़ी होगा। एक रीड अपडेट के लिए अलग टूल बनेगा, एक पुट के लिए अलग टूल बनेगा, डिलीट के लिए अलग टूल बनेगा, डेटाबेस कनेक्शन के लिए अलग टूल। हाँ, तो रेस्ट एपीआई जैसा लगा है, होता भी रेस्ट एपीआई जैसा ही है। तो ये सब चीज़ें तो हमें समझ में आ गई कि ठीक है, एमसीपी सर्वर क्या है, कैसे है। वो एक सर्वर ही है बेसिक, अलग-अलग टूल्स है। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप जब एआई से बात करते हो तो कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल नहीं है, अभी तक नहीं है। तो उस प्रोटोकॉल को, उस टूल के लिए हमारे पास आया ये वाला चीज़, जिसको हम बोलते हैं एमसीपी सर्वर। अब एमसीपी है क्या? एमसीपी को डिज़ाइन किया एंथ्रोपिक, क्योंकि देखिए पैसे तो एंथ्रोपिक ही कमा रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ, आप चाहे कर्सर यूज़ करो, चाहे विंडसर्फ यूज़ करो, एंड ऑफ द डे सब कुछ एंथ्रोपिक पे जा रहा है। क्लॉड की ही एपीआई हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम चैट जीपीटी की भी एपीआई यूज़ करते हैं। बट कर्सर कई बार अच्छा काम करता है, विंडसर्फ अच्छा नहीं करता। कई बार विंडसर्फ बहुत ही बेहतरीन काम करता है, कर्सर नहीं करता। डिफरेंस क्यों है? जब सभी क्लॉड की एपीआई यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंस आता है कि किसने कैसे टूल्स बनाए, वो टूल्स कितने पावरफुल हैं, कितना कॉन्टेक्स्ट समझ पा रहे हैं, वहीं पे कहानी आती है। तो एमसीपी बनाया हमारे एंथ्रोपिक ने और कहा कि देखो, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड्स हैं, और स्टैंडर्ड हर कोई बनाता है। जैसे वेब के भी स्टैंडर्ड्स हैं, रेस्ट एपीआईज बननी चाहिए। क्यों हम स्टेटस कोड को 7000 नहीं लिखते? क्यों हम स्टेटस कोड को एबीसी नहीं लिखते हैं? क्योंकि स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कि स्टेटस कोड 200 होगा, 300 इनकम के लिए यूज आएगा, 400 500 ऐसे होगा। क्यों नहीं स्टेटस कोड कभी 800 भेजते? क्योंकि स्टैंडर्ड्स हैं। इसी तरह से ऑथेंटिकेशन के भी स्टैंडर्ड है, OAuth 2 है, और भी बहुत सारे वेब
कॉन्फ़िगरेशन के स्टैंडर्ड्स हैं। तो मैंने कहा देखो सॉफ्टवेयर नहीं बना रहा हूँ, प्रोटोकॉल बना रहा हूँ, स्टैंडर्ड बना रहा हूँ कि जब भी वेब कनेक्ट होगा HTTPS लिखोगे, वैसे ही जब भी प्रोटोकॉल्स बनाओगे इन चीज़ों का ध्यान रखोगे। तो अब एक-एक चीज़ करके समझते हैं। अब ये जो है हमारा मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, इसमें मॉडल एक कीवर्ड है हमारे पास में, कॉन्टेक्स्ट एक कीवर्ड है और प्रोटोकॉल एक कीवर्ड है। एक-एक करके सबको समझ लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा। सबसे पहले आते हैं मॉडल पे। तो मॉडल क्या है? मॉडल आपने कई मॉडल देखे होंगे, AI के मॉडल्स हैं। अब ये ChatGPT का वर्जन 4 भी हो सकता है, क्लाउड भी हो सकता है, जेमिनी भी हो सकता है। लेकिन जो मॉडल है ना, ये कुछ चीज़ों पे काम करते हैं। जैसे कि हो सकता है आप टेक्स्ट मॉडल से डील कर रहे हो सकता है आप इमेज मॉडल से डील कर रहे हो, करते हो कि नहीं? इमेज मैनिपुलेशन वगैरह, हो सकता है वीडियो से डील कर रहे हो। तो हमारे मॉडल ये कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं। अब हम जो चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि मॉडल किसी से भी डील कर सकता है, तो यही फर्स्ट पार्ट है मॉडल। देखा कुछ था ही नहीं इसमें कि हाँ, ChatGPT जैसे मॉडल होते हैं। दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कॉन्टेक्स्ट। आपका चाहे ChatGPT हो, चाहे जेमिनी हो, जो भी हो, सबको कॉन्टेक्स्ट लगता है। कॉन्टेक्स्ट मतलब किस संदर्भ में बात कर रहे हो। मतलब कि जैसे फैन हो सकता है, कोई शाहरुख खान का फैन की बात कर रहा हो, कोई फैन हो सकता है सीलिंग फैन की बात कर रहा हो, तो अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट होते हैं हर चीज़ के। जितना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट दोगे, उतना अच्छे से LLM प्रेडिक्ट कर पाएगा आप क्या करना चाह रहे हो, क्योंकि उसी बेसिस पे वो सर्च करता है, ऐसे ट्रेनिंग होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक बात बताओ, जो अभी हमने डिस्कस करा, उसी के आधार पे मैं आपसे एक कॉन्टेक्स्ट और देता हूँ कि चेक इफ द एरर दैट आई एम गेटिंग इन दिस रेपो इज मेंशन्ड इन एनी इश्यू और बीइंग डिस्कस्ड इन द स्लैक। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि देखो मुझे कोई एरर मिल रहा है कंसोल के अंदर, उस एरर को एक बार फाइंड आउट करो कि मेरी जो रेपो है, अब इंटरनेट पे तो 1000 रेपो है गिटहब की, आपने रेपो 15 मिनट पहले क्रिएट करी है, क्या LLM के पास उसका कॉन्टेक्स्ट है? बिल्कुल नहीं है। तो उसमें डिस्कस करो। ऊपर से आपके कहा कि स्लैक, अब हर कोई LLM आपके चैट में थोड़ी ना घुस जाएगा, स्लैक के अंदर वो तो प्रोटेक्टेड रहता है। ऊपर से फिर स्लैक के अंदर जो डिस्कशन हुआ वो तो 15 मिनट पहले नहीं, 15 सेकंड पहले हो सकता है। तो कैसे पता लगा कोई LLM कि ऐसा भी कुछ हुआ है? ये तो कैपेबिलिटी है ही नहीं, पूरा LLM के बाहर की कैपेबिलिटी है। लेकिन इस कैपेबिलिटी को अगर आप कस्टमाइज्ड कोड लिख दो और उसको कॉन्टेक्स्ट देना शुरू कर दो, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो हमने क्या करा कि हमने उसको कॉन्टेक्स्ट देना शुरू कर दिया। पहला कॉन्टेक्स्ट, अब 2 कॉन्टेक्स्ट लगेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप 2 चीज़ें बोल रहे हो कि यार या तो गिटहब में देख लो या स्लैक में देख लो, हो सकता है आप 10 चीज़ें और बोलो कि 10 जगह और देखो, तो वो भी हो सकता है। तो हमने क्या करा, उसको कॉन्टेक्स्ट देना शुरू करा। कॉन्टेक्स्ट कैसा कि आप क्या करो, रिपो का आपका जो भी रिपॉजिटरी है, उसका जो इश्यूज़ हैं, उसकी पूरी लिस्ट आप उसको दे दो, जब भी उसको चाहिए एकदम फ्रेश फेच करके दो। तो ये हो गया हमारा कॉन्टेक्स्ट का टाइप। कॉन्टेक्स्ट के टाइप पे भी आते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रेपो का इशू। इसी तरह से आपने कहा कि एक और MCP सर्वर बनाते हैं जो क्या करेगा, स्लैक चैनल पे जाएगा और क्या देगा आपको, स्लैक चैनल का जो भी आप चैनल बोलोगे सिर्फ उसका एक्सेस देगा। तो सब चीज़ें आप एक्सपोज़ नहीं करो, लिमिटेड चीज़ें। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, इसी को ही बोलते हैं MCP सर्वर्स। हाँ जी, कि हम एक और सर्वर बनाएँगे जो आपको रिपॉजिटरी देगा गिटहब से, एक और MCP सर्वर बना रहे हैं जो कि आपको देगा स्लैक का एक्सेस, हो सकता है पोस्टग्रेस का हो सकता है मोंगो का हो। तो अब जब आप MCP सर्वर्स बनाते हो तो ये क्या बना रहे हो, छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर्स बना रहे हो, छोटे-छोटे टूल्स बना रहे हो। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं किस तरह से हम दे सकते हैं, कितने तरह से, तो एंथ्रोपिक एक्चुअली डिज़ाइन किया, या आप कह सकते हो उन्होंने हमें बताया कि देखिए ये जो कॉन्टेक्स्ट आप दे सकते हो ना, 3-4 तरह से आप दे सकते हो। पहला तो टूल्स क्या है, FN क्या है, फंक्शन, बस फंक्शन है, लिटरली फंक्शन है और कुछ भी नहीं है। एक फंक्शन जो कि कुछ कॉल करता है, डेटा फेच करके लाता है। तो सबसे पहली चीज़ है टूल। तो जब भी कॉन्टेक्स्ट देना है आप टूल से कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो, मतलब अपना फंक्शन बनाओ, सर्वर पे रन करो और वो दे दो आप। ये जो फंक्शन है ना, इस पे मैं अभी और बात करूंगा कि मुझे और क्या चाहिए इस फंक्शन के अंदर, क्या होना चाहिए, और हो सकता है आप एग्री करो, डिसएग्री करो, उस पे भी चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़ है रिसोर्सेज क्या है, देखा ना, आया अब कर्सर और सब दिमाग में कि हाँ रिसोर्सेज कई बार साथ में देने होते हैं या फिर रिसोर्सेज लाने होते हैं साथ में। जैसे कि सपोज करो और कॉन्टेक्स्ट देना है, तो आप एक CSV फाइल साथ में अटैच करके उस फंक्शन को रन कर सकते हो और उस LLM को दे सकते हो। यहाँ पे कर्सर और क्या करते हैं कि आपकी जो भी फाइल्स हैं, हो सकता है जावास्क्रिप्ट फाइल्स हो, टाइपस्क्रिप्ट फाइल्स हो, उनको भी साथ में लेके जाते हैं और साथ में लेके भी आते हैं। तो रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। तो पहला कैटेगरी हो गया आपका टूल्स, कैसे बना लो फंक्शन। दूसरा होगा रिसोर्सेज। तीसरा ये एक मेथड और डिजाइन करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट आप सैम्पलिंग के थ्रू भी दे सकते हो। सैम्पलिंग क्या है, मैं क्लाउड भी यूज करना चाहता हूँ, लेकिन क्लाउड टेस्टिंग फाइल्स अच्छी नहीं लिखता, तो मैं वहाँ पे जेमिनी यूज करना चाहता हूँ, लेकिन रीडमी फाइल तो हमारा ChatGPT अच्छे से बनाता है, तो मैं OpenAI यूज करना चाहता हूँ। तो तीनों को अगर आप एक दूसरे को कॉन्टेक्स्ट देना है तो वो समझेंगे कैसे, वहाँ पे सैम्पलिंग यूज आ सकती है। अभी तक बहुत कम लोगों को मैंने देखा है सैम्पलिंग यूज करते हुए, बट हाँ हमने एक इंटरनल टूल बनाया था जस्ट फॉर फन टेस्टिंग के लिए, कि कोड हम क्लाउड से लिखवा रहे हैं, टेस्ट केसेस हम जेमिनी से लिखवा रहे हैं। ये एक तरह का सैम्पलिंग है, हमने जस्ट फन करके देखा था, आप भी करके देख सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है। और तीसरा है प्रॉम्प्ट्स, कि यूजर और या फिर क्लाइंट है, वो जो भी टेम्पलेट देता है या जो भी प्रॉम्प्ट लिखता है, वो तो लिखता है कि डिजाइन मी अ लॉगिन पेज, बट हाँ प्रॉम्प्ट को और एनहांस करना तो आपकी जिम्मेदारी है। तो जो भी क्लाइंट ने जो प्रॉम्प्ट दिया है उसको और एनहांस करें। आपने क्लाउड वगैरह में देखा होगा एनहांस दिस प्रॉम्प्ट, हाँ वही प्रॉम्प्ट है। आपने प्रॉम्प्ट अगर नहीं देखा तो क्लाउड की वेबसाइट पे जाके देखिए, वहाँ पे आप जो भी प्रॉम्प्ट लिखते हैं वहाँ पे आता है एनहांस दिस प्रॉम्प्ट। यही प्रॉम्प्ट्स हैं कि आप यूजर का जो भी टेम्पलेट है उसको लेके और उसको और एलॉबरेट करके लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि यूजर नहीं लिखता इतना एलॉबरेट करके। तो यही है हमारा कि आपके टूल्स और रिसोर्सेज आप बनाते हो MCP सर्वर पे और आपका क्लाइंट उससे कॉन्टैक्ट करता है AI मॉडल के थ्रू। बड़ा ही बेसिक्स है। अब आते हैं इसके और अच्छे डायग्राम्स पे ताकि हमको समझ में आए। अच्छा अभी एक चीज़ तो बाकी, एक चीज़ तो हमने करी नहीं, प्रोटोकॉल्स। कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया, मॉडल समझ में आ गया, अब हमारी बारी आती है प्रोटोकॉल्स पे। तो फाइनली प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल का हमेशा मतलब है रूल्स। जब भी आपको प्रोटोकॉल समझ नहीं आया ना, तो हमेशा याद रखो, एग्जांपल मिलिट्री के अंदर एक प्रोटोकॉल होता है कि आपको ऐसे ही जाना है, ऐसे ही ड्रेस पहननी है। प्रोटोकॉल है क्या? आपके कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। तो प्रोटोकॉल्स हमेशा सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, इसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, जो होगा रिफ्लेक्शन रिक्वेस्ट। अभी मैं आपको और डॉक्यूमेंटेशन और दे दूंगा। ये जो रिफ्लेक्शन रिक्वेस्ट है ना, यही MCP का है कि किस तरह से आपको बात करनी है। इस पे मैं और आऊंगा अभी। ये जो पूरी रिफ्लेक्शन है ना, ये हम सेकंड पे MCP सर्वर के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे आप बात कर सकते हो, क्योंकि आप बात तो REST API से भी कर सकते थे, बात तो आप GraphQL से भी कर सकते थे, वहाँ भी रिफ्लेक्शंस होते हैं। लेकिन MCP सर्वर क्या करता है वो पूरा मैं अभी आपको बताता हूँ। ये बाय द वे पूरा डायग्राम एग्जैक्टली तो नहीं है, बट डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा मेंशन किया गया। आपको डॉक्यूमेंटेशन देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, MCP सर्वर लोकल स्टोरेज। मुझे ये डायग्राम थोड़ा अजीब सा लगा तो मैंने सोचा मैं बना देता हूँ आपके लिए बेटर वाला। तो ये बेटर तो नहीं, मतलब मेरे कॉन्टेक्स्ट में बेटर है, ठीक है। तो आपके पास हमेशा क्या होता है, सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है आपके पास क्लाइंट। अब क्लाइंट जरूरी नहीं है कि कर्सर ही हो या विंडसर्फ ही हो, क्लाइंट कुछ भी हो सकता है।
आपके कुछ क्लिक हो सकता है गेम आपका क्लाइंट हो सकता है प्रीमियर प्रो आपका क्लाइंट कुछ भी हो सकता है जो कि रिक्वेस्ट सेंड कर सके या बटन क्लिक कर सके, वही आपका क्लाइंट है। क्लाइंट डील करता है एमसीपी सर्वर से और एज ऑफ नाउ एमसीपी सर्वर स्टेटफुल है। और यही चीज़ जो मैं फ्यूचर के लिए सोच रहा हूँ यार, कि इनका स्टेटफुल होने की जरूरत क्या है? मतलब हमेशा तो इनका स्टेटफुल होना जरूरी नहीं है। दो तरह के सर्वर होते हैं, एक स्टेटफुल एक स्टेटलेस। जो आप वर्सल वगैरह पे देखते हो वो सब चीज़ें स्टेटलेस हैं। जो आप एक्चुअली में डिप्लॉय करते हो EC2 मशीन्स वगैरह पे वो सारे स्टेटफुल हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलवेज वो सर्वर अप एंड रनिंग रहता है। लेकिन जो फंक्शंस देखते हो आप क्लाउड में रन होते हैं वो सब होते हैं, वो स्टेटलेस होते हैं। तो हमारे पास अभी जो है ना दो तरह के आप चीज़ें कर सकते हो एमसीपी सर्वर में। एक सर्वर सेंट इवेंट्स, कि सर्वर के पास कुछ नया अपडेट आया कुछ आया तो सर्वर इवेंट सेंड कर सकता है, और एक मैसेज एंड पॉइंट जो कि रेस्ट एपीआई जैसा ही है, उसमें कोई खास अंतर नहीं है। अब आप दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो कि मैं सर्वर से इवेंट भेजूंगा या फिर मैं एंड पॉइंट से कनेक्ट करूंगा, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ईजी, इनके कोड लिखना भी बहुत आसान है। अब सपोज करिए हमने एक MongoDB का क्लाइंट बनाया, मैं भी आपको बताता भी हूँ। देखिए सपोज करिए ये MongoDB का हमारा क्लाइंट है, और सबसे अच्छी बात है कि देखिए एमसीपी सर्वर आपको जावास्क्रिप्ट में मिलते हैं, जावा में भी मिलते हैं, पाइथन में भी मिलते हैं, आपको जैसे चाहे आप क्रिएट कर सकते हो। हमने बनाया एक MongoDB का बेसिक सा क्लाइंट, ये कुछ इसको यूआरएल्स वगैरह दिए, और फिर ये हमने कनेक्शन करा। अगर आपको MongoDB आता है तो ये कुछ भी आपको नया नहीं लगने वाला है, पर अगर MongoDB नहीं आता तो इन पे इग्नोर करो कि ये डेटाबेस से कनेक्शन कर रहा हूँ। उसके बाद सर्वर बनाने का कोड सिर्फ इतना सा है कि ये हमें एमसीपी सर्वर का एक क्लास टाइप से दे रखी है, और हमने उसके अंदर जो भी नाम था वो दिया, वर्जन दिया हमने, और भी चीज़ें दे सकते हैं, बट अभी के लिए हमने एक सर्वर बना लिया हमारा। ठीक है, कोई बड़ा काम था नहीं था, 4 लाइन 3 लाइन 2 लाइन का कोड है। उसके बाद हमने एक डीबी करा और डीबी के अंदर कहा कि कनेक्ट टू Mongo। एक मेथड बनाया, इस मेथड के अंदर कुछ भी एआई जैसा नहीं है, ये बेसिक डेटाबेस कनेक्शन है। अब सेम इसी तरह से हमने कहा कि गेट डॉक्यूमेंट स्कीमा वगैरह ये सब मैंने स्ट्रक्चर लिखे कि भाई हमारा डॉक्यूमेंट इस तरह से होगा। ये सब वैलिडेशन है और जॉर्ड के वैलिडेशन है। अगर आप कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम जॉर्ड पे एक वीडियो बना देंगे आपके लिए, है कि नहीं? बड़ा सा ट्यूटोरियल ले आएंगे। अब हमने कहा कि रजिस्टर करने चाह रहे हैं हम एमसीपी के ऑपरेशंस को। अब ऑपरेशंस कैसे हो सकते हैं? गेट डॉक्यूमेंट्स, तो यूजर क्या बोल सकता है? रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम MongoDB कलेक्शन। अब जरूरी नहीं है कि यूजर ये एग्जैक्ट कमांड ही दे, यूजर बोल सकता है आई वांट टू गेट सम डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम MongoDB। वहां पे क्या है कि अब एलएलएम क्या है कि आपके कॉन्टेक्स्ट को समझ सकता है कि हाँ इस जैसी कोई क्वेरी है, इस जैसी कोई क्वेरी है, तो मुझे जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए वो गेट डॉक्यूमेंट्स वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए। अब गेट डॉक्यूमेंट के ऑपरेशन में क्या होता है? सबसे पहले स्कीमा लेता है कि हाँ भाई ऐसा मुझे डेटा लेके आना है। उसके बाद एक सिंपल सा हैंडलर है जो कि आपके कलेक्शन पे जाता है, कोई क्वेरी रन करता है, उसको जो भी समझ के और पैरामीटर्स दे देता है उस तरह के, और आपको फाइनली डॉक्यूमेंट रिटर्न कर देता है। तो अब जो एलएलएम है वो खुद के डेटाबेस के पास, खुद की नॉलेज के पास जाने के बजाय मेरा एक फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है कि ऑपरेशन ये वाला एग्जीक्यूट करो। अब इस तरह के जितने ऑपरेशन बना सकते हैं, जैसे ये ऑपरेशन मैंने इंसर्ट के लिए बना रखा है कि अगर इंसर्ट जैसा ऐसा कुछ आए तो ये वाला ऑपरेशन आप एमसीपी से परफॉर्म करो। तो वही बात है, मैं अपने एलएलएम को कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, और फाइनली जब आपका काम हो जाए उसके बाद क्या करो, ये आप इनिशियलाइज कर दो और ये कर दो। तो देखा जाए तो ये जो बीच में जितने काम हुए हैं ये तो मेरा कोड है, इसमें तो कोई एआई जैसी बात ही नहीं है, ये सारा वैलिडेशन है, इसमें भी एआई जैसी कोई काम नहीं है। एक काम आया हमारा कि ये सर्वर हमने बनाया, और दूसरा जो काम आया कि ये सर्वर को इस तरह से हमने ये लिसन करवाया, बस। हाँ जी, बस इतना सही है। अब इससे आप वेदर डेटा पूछो, इससे आप MongoDB कनेक्शन करो, इससे आप पोस्टग्रेस कनेक्शन करो, ये आपके ऊपर है। तो बस इस तरह से बन जाते हैं, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। अब ये सारा भी बताता हूँ आपको। खैर अभी चलते हैं हम यहाँ पे। तो अब बात क्या आई कि एक्चुअली में मुझे डेटाबेस से बात करनी थी, ये MongoDB से मैं बात कर रहा था। अब मान लीजिए MongoDB से आप बात कर रहे थे एआई वगैरह थोड़ा सा, लेकिन MongoDB ने अपनी एपीआईज अपडेट कर दी तो क्या होगा? हाँ, तो वहाँ पे एक्चुअली में ये एमसीपी सर्वर्स काम आते हैं कि आपने जो एमसीपी सर्वर बनाया उसको थोड़ा सा अपडेट कर दो कि अब रिक्वेस्ट इस तरह से भेज जाती है, और दैट्स इट। अब आप किसी से भी बात कर सकते हो। अगर मान लीजिए कल को प्रीमियर प्रो भी आपको प्रोग्रामेटिकली कंट्रोल करना आ जाए, या फिर आपको फोटोशॉप प्रोग्रामिंग की एपीआईज एक्सपोज कर दे कि इस तरह से आप हमसे बात कर सकते हो कोड के थ्रू, तो बस उसी दिन प्रीमियर प्रो का अपडेट आ जाएगा कि प्रीमियर प्रो में आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हो और जो डेटा है वो लेके जाएगा, और जिस तरह से फाइल अपडेट करनी है, टाइमलाइन अपडेट करनी है, तो प्रीमियर प्रो का कर्सर आ जाएगा। उसी तरह से फिग्मा जिसकी ऑलरेडी एपीआईज हैं अवेलेबल, उसका भी एमसीपी सर्वर बनाया जा सकता है। तो आई थिंक अब आपको काफी आइडिया होगा एमसीपी सर्वर्स कैसे हो सकते हैं। अब एक छोटी सी चीज और दिखाता हूँ। अब एमसीपी सर्वर आपको समझ में आ गया क्या होता है? तो एमसीपी सर्वर का प्ले स्टोर आना तो ऑब्वियस ही बात है। तो देखिए ये है विंडसर्व, ये कर्सर जैसा ही है। अब यहाँ पे इसकी सेटिंग्स पे मैं गया, इन्होंने कहा ऐड सर्वर, किसी ने अपनी फाइल्स बना दी, ऐड सर्वर करता हूँ। देखिए यहाँ पे सर्वर है हमारे पास, गिटहब का सर्वर है, और पपीटियर का है, पोस्टग्रेस का है, प्लेराइट का है, स्ट्राइप का भी है, स्लैक का भी है। जैसा कि मैंने कहा स्लैक सबसे कॉमन है। तो आप जैसे ही ऐड सर्वर करते हो तो बोलते हो कि अपने स्लैक का देखो बॉट टोकन दे दो और वर्कस्पेस की आईडी दे दो, और बस की वैल्यूज तो देनी पड़ेगी कि मेरा एक्सेस कर लो। और जैसे आपने सेव करा दैट्स इट। अब ये एक्चुअली में डेटा ला सकता है आपके स्लैक से। अब जहाँ पे भी जाओगे आपको इसी तरह के सर्वर्स मिलेंगे। ऑलराइट, अब बात करते हैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन, वो तो पढ़ लें। सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन जो पढ़ना चाहिए वो है इंट्रोड्यूसिंग मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। अब भाई जिन्होंने बनाया है उनका अनाउंसमेंट तो पढ़ लो, एंथ्रोपिक सबके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हो, इनको नहीं पढ़ रहे तो इनको जरूर पढ़ लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वैसे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या है, ये स्पेसिफिकेशंस है, इस तरह के एसडीकेस अवेलेबल है, लोकल एमसीपी सर्वर सपोर्ट है, एंथ्रोपिक में भी आप देख सकते हो, ये सब है। तो पूरा एक बार पढ़ लेना। वैसे पूरा यही जो मैंने बताया है बड़ा छोटा सा लिखा है इन्होंने, और बड़ा अच्छे से प्रिसाइज कर लिया है कि इंस्टॉल प्री बिल्ट एमसीपी सर्वर्स, और ये सब बड़ा अच्छा लिखा है। तो देखिए इन्होंने बनाया पूरा प्रोटोकॉल, एक बार तो रीड करना बनता है। अब आपको एक वेबसाइट और मिलेगी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल.io, यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से दे रखा है कि कैसे काम करना है। अगर आप पाइथन में इंटरेस्टेड हो तो पाइथन का आप एसडीके देख सकते हो, टाइपस्क्रिप्ट का भी है, जावा का भी है, कॉटलिन का भी है, और स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कि क्या करना है, कैसे करना है, पूरा होना चाहिए कि आर्किटेक्चर क्या होता है इसका, किस तरह से पूरा किया जाता है, बेस प्रोटोकॉल क्या है, मैसेज कैसे होगा, लाइफ साइकिल। तो अगर आप डेवलप कर रहे हो तब इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ अगर एक्सप्लोर कर रहे हो कि मुझे सिर्फ समझना है तो इतना ज़्यादा की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सर्वर्स फॉर डेवलपर्स, देखो इन्होंने एक्जैक्ट यहाँ पे आपको दिखेगा वही रिसोर्सेज हैं, वही टूल्स हैं, वही प्रॉम्प्ट्स हैं। सैम्पलिंग का यहाँ का हम डिस्कस है, सैम्पलिंग का आगे जाके डिस्कस है। उसके बाद पाइथन में कैसे लिखना है, नोड में कैसे लिखना है, सबका यहाँ पे अवेलेबल है कि ये हमने ये सभी वेदर का डेटा यूज कर रहे हैं। वेदर एग्जाम्पल क्योंकि बहुत ईजी पड़ता है, क्योंकि वेदर के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट निकालना बहुत ईजी है कि मुझे जयपुर का डेटा बताओ या फिर मुझे दिल्ली का डेटा बताओ, तो बड़ी ईजिली कि ठीक है वेदर का पूछ रहा है तो वेदर वाला एमसीपी कॉल करना है और वहाँ से डेटा लेके आना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इस तरह से आप ये पूरा का पूरा पैकेज.json है, और यहाँ पे फिर आपका बिल्डिंग और सर्वर, देखिए सर्वर बनाने का कोड तो वही है जो हमने बात किया था, एपीआईज वगैरह दो, उसके बाद सर्वर तो ये रहा, बस इतना सा काम है। उसके बाद हेल्पर फंक्शन, फंक्शंस आप किस तरह से देखिए फेच कॉल्स है बस एपीआई के, और क्या है कुछ भी नहीं है। हाँ अच्छे से लिखा हुआ है, इंटरफेस डिफाइन किए हुए हैं, सब कुछ है, वो बात अलग है अपनी। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन टूल एग्जीक्यूशन वगैरह देखो वही सब जॉर्ड वगैरह सब कुछ है, मैंने थोड़ा सा ईजी करके लिख दिया और ईजी करके बताया। इसको करते हैं अब रनिंग, सर्वर कैसे रन करना है देखो।
वही कॉन्स ट्रांसपोर्ट स्टूडियो सर्वर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे आओ, तो इतना ही तो है और यही क्या एग्जैक्ट, हाँ जी उतना ही है। और ये हमने कोई एरर वगैरह है तो कैच कर लिया। लेकिन अब इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, देखिए एग्जीक्यूट कैसे करना है वो सब अपना अलग अलग कर रहे हैं कि मैं किस तरह से इस सर्वर को कॉल करवाऊंगा। क्लॉड अलग करता है, विंडसर्फ अलग करेगा, कर्सर अलग करेगा, तो उसके लिए सबको इन्होंने दे रखा है कि अगर करना है आपको इंस्टॉल तो क्या करो, देखिए यहाँ पे कि अगर आपको क्लॉड में इंस्टॉल करना है तो एक फाइल बना दो, क्लॉड डेस्कटॉप config.json, इसका मैं आपको सैंपल दे देता हूँ यहाँ पे, इन्होंने दे रखा है। और आप इस तरह से क्लॉड के अंदर अपना एमसीपी सर्वर लगा सकते हो। ये है बस, देखा कुछ था ही नहीं इसमें कि एमसीपी सर्वर एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर वेदर टाइप का एक एमसीपी सर्वर बनाया है, कमांड ये नोड से रन होता है और ये इसके आर्गुमेंट्स है कि यहाँ पे फाइल रखी है, इसको चला देना, बस इतना सा है। देखा, तो एमसीपी सर्वर का जो इतना आप सोच रहे थे कि अरे ये तो कोई खतरनाक चीज़ है, ऐसा कुछ है, ऐसा तो कुछ नहीं है, बड़ा इजीली। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, अब इतने तरह के टूल्स अभी हमने जस्ट देखा कि यार ये तो मार्केट प्लेस बन सकता है कि गिटहब है, ये है, तो आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि किसका मैं बनाना चाहता हूँ, कमेंट्स में बताइएगा किसका दिमाग में आ रहा है कि किसका एमसीपी सर्वर बनाना चाहूंगा ताकि मैं उस चीज़ को अपने चैट इंटरफेस से कंट्रोल कर पाऊँ। तो ऑलरेडी किसी ने एक तो पल्स भी अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, आपको यहाँ पे एमसीपी सर्वर मिल जाते हैं, pulsemcp.com। तो यहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स हैं, फाइल सिस्टम के भी है, पपीटियर के भी है, ये भी है, ये तो है ही है, यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर दोनों आपको काफी मिल जाते हैं। तो pulsemcp.com नहीं सॉरी pulsemcp.com ही है, तो ये तो बड़ा फेमस है ही है, ऑब्वियसली बात है। लेकिन एक और है ये एमसीपी ऐप स्टोर, हाँ जी किसी ने एमसीपी का ऐप स्टोर ही बना दिया कि गिटहब का एमसीपी सर्वर ये रहा, तो आपको जब भी चाहिए तो आप ये लो गिटहब का पूरा एमसीपी सर्वर, पुल रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, देखो एग्जैक्ट सेम है। गिटहब पे कमांड कौन सी है, npx गिटहब सर्वर गिटहब, और आप इसका सोर्स कोड भी देखोगे अगर अवेलेबल होगा तो वही सारी एपीआईज कॉल हो रही है। आई थिंक मुझे कहीं दिख तो नहीं रहा लिंक और स्क्रीनशॉट्स भी नहीं दिख रहे, बट हाँ ये एक पोटेंशियल है कि ऐसा हो सकता है, अभी तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बट हाँ मे भी पोटेंशियली फ्यूचर में आपको इसका भी एक छोटा सा ऐप स्टोर दिख जाए कि हाँ इस तरह से मोबाइल क्लाइंट्स और ये सब कंट्रोल होते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनको कंट्रोल कैसे किया जाए। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे टूल निकल के आएंगे। अब कर्सर एक यूनिक ये नहीं रहा कि हम ही हैं जो ऐसे कोड जनरेट कर सकते हैं, अब बहुत सारे एडिटर्स भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अब एमसीपी सर्वर्स हैं। तो जो काम पहले क्लॉड ने किया था या फिर कर्सर ने किया वो सब अब कोई भी कर सकता है, और इवेंचुअली आप देखेंगे कि आपके सभी कोड एडिटर्स के अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो कोड फाइल्स भी जनरेट कर सकता है, उनको रीड भी कर सकता है, और इवेंचुअली ये फंक्शनलिटी एक्सपैंड होगी। तो और डेवलपर्स के लिए एक नया टूल जनरेट करने के लिए हो गया कि अब आप अपना एक सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकते हैं जो कि यूजर को ऐसे एड-ऑन्स और प्लगइन्स दे देगा जो कि प्रीमियर प्रो में भी रन हो सकते हैं, एफसीपी में भी रन हो सकते हैं, और भी कोई सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ करते हैं, जैसे मैं रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ यहाँ पे भी रन हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो एमसीपी सर्वर इसीलिए सबको फैसिनेट कर रहे हैं क्योंकि एक नया प्रोग्रामिंग पैराडाइम ओपन करते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम इमेजिन करो कभी जब एपीआईज एक्सपोज हुई होगी, अरे वाह अब एपीआईज एक्सपोज हो गई, अब मैं भी गूगल लॉगिन लगा सकता हूं, कोई भी गूगल से लॉग, ये एग्जैक्टली सेम मोमेंट है। तो जो पूरा एआई का वर्ल्ड है ना, मुझे तो पूरा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वापस से एक और सेम साइकिल से गो थ्रू होती हुई नजर आ रही है, जो वापस से वही एक्साइटिंग टाइम है, और ज्यादा नया डेवलपमेंट आप सीख सकते हो, और ज्यादा नए डेवलपर्स की डिमांड तो मुझे कहीं दिखता है तो वो यही दिखता है। खैर आपके क्या विचार है बताइएगा, वीडियो काफी बड़ा हो गया ऑलमोस्ट। For large language models to be truly useful, they often need to interact with external data sources and services and tools, and until recently, that was typically done with application programming interfaces or APIs. Now, in late 2024, Anthropic introduced a new open standard protocol. That's Model Context Protocol, or MCP. And it has already made quite the splash, and it standardizes how applications provide context to LLMs. So let's define these two terms, MCP and API, and take a look at their similarities and differences. Now, a good metaphor for MCP is that it's kind of like a USB-C port for your AI applications, and that's because it standardizes connections between AI applications, LLMs, and external data sources. So if you think about just your standard laptop that you might be using, well, that probably has a set of USB-C ports attached to it. It's a really old one. And in those ports, well, you can plug in all sorts of cables, and they all use the USB-C standard to interface with all sorts of peripherals. So perhaps you've plugged one of these things into a monitor, another one is connected to an external disk drive, and perhaps you've also added in a power supply for the third one. It really doesn't matter who makes the peripherals, they all work together using this common standard. Well, MCP is kind of like that. So if we take a look at really what's in it, there is an MCP host, and that also runs a number of MCP clients. Now, each client opens a JSON RPC 2.0 session using the protocol that comes with MCP, so the MCP protocol, and that connects to external MCP servers. So we have a client-server relationship here. Now, servers, those expose capabilities. So perhaps we've got a server for access to a database. Maybe we've got another one which gives us access to a code repository. And then maybe we have another server
that gives us access to an email server. So if we go back to the USB-C analogy, we could think of the laptop as being kind of like the MCP host, the MCP protocol. This is really what's signified by the USB-C connection. And then the drive and the monitor and the power supply, we can think of those really as MCP servers. Okay, so that's the architecture, but what are the capabilities of MCP? Well, it addresses two main needs of LLM applications. And when I say LLM applications, I particularly mean AI agents. एक सेकंड रुको यार. हेलो हेलो. हाँ भाई. हम्म. हाँ तो वो बैंक से तो एक कनेक्शन चाहिए ही. बैंक से अगर कनेक्ट हो जाएगा तो फिर अपना ये विड्रॉइंग वगैरह ये सब इजी हो जाएगा. हम्म. हम्म. अच्छा तो ये किस चीज़ के लिए? फैन के लिए? अच्छा तो ये एपीआईज अवेलेबल है क्या इनके लिए? हम्म. ये एक बार इसका लिंक भेज सकते हो? मैं एक बार पेज वगैरह देख करके अच्छे से सारा कॉन्टेक्स्ट लेके बता दूँ. ये developer.hdfcbank.com पे. अच्छा. ऑनलाइन वेरिफिकेशन. हम्म. इसके बारे में कहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मुझे पता नहीं है इसका इधर. एक बार पढ़ के बता सकता हूँ मैं. हम्म. अर्निंग सैलरी बेस्ड रखोगे या फिर क्या रखोगे? वो एजेंट्स के लिए है या फिर किसकी बात कर रहे हो? हम्म. परसेंट बेस्ड रख दो ना. हम्म. 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 ये भी करना पड़ेगा. ठीक है.
इसमें आई थिंक पब्लिशर्स को अपना एक रेट तो मेंशन करना पड़ेगा, वो मेंशन करेंगे अपने जो भी एडवर्टाइजिंग स्पेस है उसके अकॉर्डिंग। हम्म। हाँ। वॉल वगैरह हो गया या फिर कुछ भी। हम्म। हाँ। हम्म। देखो देखो ऑन बोर्ड करने के लिए तो एजेंट ही जाएगा, है ना? तो हाँ, एजेंसीज के साथ भी, लेकिन वहाँ उनको भी ऑन बोर्ड करने के लिए कोई तो जाएगा, या फिर वो खुद से आएंगे। अपन एक ऑनबोर्डिंग सिस्टम बना सकते हैं जो हम लोग के थ्रू ही वेरीफाई हो के आगे बढ़े। अंदर डाला है ना वो एजेंट्स जो करेंगे, वो वाला ऑनबोर्डिंग सिस्टम डाल रखा है, बट जो कंपनी खुद से ऑनबोर्ड होना चाहती है उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं है। इसमें थोड़ा इशू आएगा, लाइक अगर मान लो, देखो अगर अभी क्या हो रहा है, एजेंट जा रहा है, ठीक है। हाँ।